काल आपण सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज सुरुवात केली होती. सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज मध्ये the colligative properties means those properties shown by a solution, dilute solution, when some simple or minimum amount of solute get added into the solution, it gives a special property. That property is known as colligative property. The first colligative property is lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. It means this P1 naught, it means it is vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent means only water is there in a beaker. You know that in that theory part, in a beaker only pure solvent is there, pure solvent, and it is to be closed. Vapors, the particles which are escaping, all particles get escaped from the surface. सगळेच्या सगळे पार्टिकल इस्केप होतात, त्यांचं वेपोरायझेशन होतं. त्याला हीट केल्यानंतर आफ्टर हीटिंग इट गेट वेपोराइज्ड अँड वेपर्स गेट फॉर्म. वेपर्स at the upper level of the solution, at the upper level of solvent, because we are taking only solvent na? At the upper layer of the solvent, vapors get collected and that vapor creates the pressure. That pressure is known as vapor pressure. That pressure is known as vapor pressure. This is vapor pressure of pure solvent, pure naught. Actually, it is vapor pressure of pure solvent, and if we add pinch of solute particles, सारे solute particles, थोड़े से solute particles upper part ला येते. Solute particle, the solute particle must be non-volatile, non-volatile, non-electrolyte. Solute particle must be non-volatile, non-electrolyte. If solute particle अगर non-volatile, अगर ये non-volatile है तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे. उसके वेपर्स नहीं बनेंगे वो तो जगह तो नहीं छोड़ेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल इस्केपिंग, पार्टिकल इस्केप झाल्यानंतर जे वेपर्स बनवतात अप्पर साइडला, ते वेपर्स वेपर प्रेशर तयार करतात. जितका अमाउंट ऑफ वेपर जास्त असेल ना तितकं वेपर प्रेशर जास्त असेल. तुम्ही सोल्यूट ऍड केलेला आहे, सोल्यूट ऍड केल्यानंतर सोल्यूटचा व्होलाटाईल नाही. सोल्यूट कॅनॉट गेट इव्हॅपोरेटेड, इट इज नॉट टू बी कन्व्हर्टेड इनटू वेपर. And then how vapor pressure is equal to that of the pure solvent vapor pressure. Vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution, they differ. Some type of difference is there. It means that when we add solute particle in this, the vapors which collects of the top side, जे vapor जमा होतील ना त्यांचं प्रमाण कमी होईल. आणि त्या vapors एकदा प्रमाण कमी झालं वेपर प्रेशर कमी होईल. लोअर्स काय होता? पाणी. पाणी काय? सॉल्व्हंट, प्युअर सॉल्व्हंट. कोण होत असतो? प्युअर सॉल्व्हंट. कोणाचे पार्टिकल होते? वॉटरचे पार्टिकल्स. हीट केल्यानंतर काय झालं? वेपर्स तयार झाले. भर 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 इस्केप झाले. ऑल पार्टिकल गेट इस्केप and it is converted into vapors. Amount of vapor is greater. And this vapor creates a vapor pressure on the surface of liquid. That vapor pressure is known as the vapor pressure of pure solvent, denoted as P1 naught. This P1 naught is greater than P, vapor pressure of solution. Vapor pressure of
pure solvent, vapor pressure of pure solvent, and it is vapor pressure of solution containing non-volatile solute particle. Non-volatile क्या होता है? Non-volatile, चलो सोचो, non-volatile which cannot be evaporated, non-electrolyte which cannot forms ions, जे आयन तयार करत नाही, ज्यांचं इव्हॅपोरेशन होत नाही, ते नॉन व्होलेटाईल आहे. तसे कोण आहे मग? बिलकुल आपल्या जवळचा मित्र आहे, युरिया, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज. These are non-volatile, non-electrolyte solute, ज्यांचं आयोनायझेशन होत नाही. अँड ते येऊन बसतात अप्पर साईडला, टॉप साईडला. खाली पुन्हा काय नंबर लावून तयार आहे, तू वर गेलास की मी येतो. पण हे तर काय वर जाऊ शकत नाही, हे जाते त्याच्या जागेवर पुन्हा ते दुसरं येतं. इट मीन्स ऑन द सरफेस पार्ट इस्केपिंग पार्टिकल डिक्रीजेस. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे वेपर्स बनवायची, त्यांनाच खाली ढकलतात ते आणि वर येऊन बसतात, आणि ते नॉन व्होलेटाईल आहे. त्यांचं काय वेपरायझेशनच होत नाही. मग वेपर प्रेशर कमी होते. कशामुळे कमी झालं? ड्यू टू ॲडिशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. इट मीन्स देर इज अ डिफरन्स इन बिटवीन. कोण होता तो? वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. काय तयार झालं? सोल्युशन. त्याचं वेपर प्रेशर. दोघातील फरक म्हणजे डेल्टा पी. याला म्हणतात डेल्टा पी. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स difference in the vapor pressure of pure solvent and solution containing non-volatile solute. P1 naught minus P is equal to delta P. P1 naught minus P is equal to delta P. It is the part about vapor pressure. Delta P is the lowering of vapor pressure. The next part is P1 naught minus P upon P1 naught. Decrease in the vapor pressure, original vapor pressure, इनका जो रेशियो होता है ना बेटे, उसको बोलते हैं रिलेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव RLVP, relative lowering of vapor pressure. It is known as relative lowering of vapor pressure. Today now revision is going on. Now questions are ready. So in short, this P1 naught minus P upon P1 naught, vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of solution containing non-volatile, non-electrolyte, vapor pressure of pure solvent, the ratio RLVP, relative lowering of vapor pressure is equal to XB. XB means mole fraction of solute. It is mole fraction of solute. It means that XB means mole fraction of solute. When you are taking such type of XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है तो आपके पास इक्वेशन भी आएगा. चलो भैया, XB का मतलब है N2 अपॉन N1 प्लस N2. वेरी वेरी डाइल्यूट. इसके हिसाब से बहुत कम है ना बेटे. N1 मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मोर. इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल. इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ. डायरेक्टली आप लिख सकते हो बेटे N2 अपॉन N1. पुट दिस वैल्यू हियर. P1 naught minus P upon P1 naught. It is RLVP. RLVP. पिक्चर के नाम याद रखते हो ना? पिक्चर के नाम याद रखते हो ना? कौन से पिक्चर के नाम? एक जमाना था, शाहरुख का एक पिक्चर आया था. हाँ, DDLJ.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत दिन चला वो, बहुत सारे दिलवाले आए भी, दुल्हनिया ले भी गए, शाहरुख के पिक्चर भी चले गए, दूसरा कोई आएगा, दूसरा कुछ अपने आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेगा, फिर नया चलेगा। सिंपल। इट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. Then with respect to this we can calculate molar mass of solute. जिस सोल्यूट के कारण ये हुआ, जिस सोल्यूट के कारण डेल्टा P निकला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, उस सोल्यूट का मोलार मास हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, इट मीन्स W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1, M1 ऊपर चले गए, अपॉन W1। यह है मोलार मास ऑफ सोल्यूट, यह है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, यह है मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, यह है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यह है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टोटल इट इज नोन एज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर इससे आपको एक फॉर्म्युला बनेगा। फॉर्म्युल्याची एक लिंक लक्षात ठेवा, तुमच्या लक्षात घ्या। अजून याच्यामध्ये इन डिटेल भरपूर आहे, परंतु आपल्याला नीटचे काही प्रश्न सोडवायचे आहेत, म्हणून माझ्या व्हिडिओचं मी व्हिडिओज दिले रिव्हिजन मध्ये मला सांगत जायचं, मेन महत्वाच्या गोष्टी सांगून काही क्वेश्चन्स घ्यायचे। हे काय होईल बेटा? M2 बरोबर W2 M1 P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट माइनस P। इट मीन्स शॉर्ट इसको डेल्टा P भी लिखोगे, डेल्टा P W1। इट इज आवर फॉर्मूला to determine molar mass of solute. Important part, relative lowering of vapor pressure क्या होता है, डेल्टा P क्या होता है, फिर उसके बाद ये molar mass of solute आप कैसे निकालोगे। ये जो डेल्टा P होता है ना, डेल्टा P also directly proportional to the concentration of solution, also directly proportional to the concentration of solution. Concentration, that is mole fraction. It is about mole fraction. Delta P is also related with number of solute particles. ये delta P जो होता है ना, ये at constant temperature होता है, at constant temperature vapor pressure and vapor pressure of pure solvent which lowers, ये वेपर प्रेशर होता है ना, ये वेपर प्रेशर ये अप टू द लेवल, दिस लेवल इज 1 atmospheric level. What atmosphere means? Atmospheric pressure level 1 atmosphere, and ये है द ग्राफ, ये टेम्परेचर। फर्स्ट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ऊपर आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट T1 के लिए, T2 के लिए, T3 के लिए हायर टेम्परेचर अप टू दिस। ये टेम्परेचर जो है ना, ये जो टेम्परेचर आएगा ना, ये T, एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये वाटर है ना तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, एंड व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल एट दिस टेम्परेचर T 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथे ते बॉईल होतं बेटा। मग थोडंसं सोल्यूट टाकलं, सोल्युशन बनवलं, सोल्युशन बनवल्यानंतर सुरू केलं, पुन्हा ग्राफ पडायला सुरू केलं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन अप टू दिस। ये जो है ना,
एट एनी टेम्परेचर, आप चेक करो, एट एनी टेम्परेचर, ये फिक्स टेम्परेचर में यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, P1 नॉट माइनस P, ये जो डिस्टेंस है ना P1 नॉट माइनस, ये जो डिस्टेंस है ना P1 नॉट माइनस P, ये P1 नॉट माइनस P का मतलब है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ से यहाँ तक वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute at a fixed temperature is used to it. टेम्परेचर बदलेगा तो ये भी बदलेगा, डिस्टेंस भी बदलेगा। पहले टेम्परेचर के लिए ये डेल्टा P1 आएगा T1 के लिए, ये T2 के लिए ये डेल्टा P2 आएगा, T3 के लिए ये डेल्टा, ये जो है ना डेल्टा P3 आएगा। बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस then this delta P also changes. Delta P is the difference in the lowering of, difference in the vapor pressure of solution, solvent and solution is lowering of vapor pressure. ये जो ग्राफ है इसमें ये इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिखाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाद में अलग बीट में बताऊंगा। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका ग्राफ, उसका फॉर्मूला। ठीक है बेटे, अभी एक एग्जांपल ले।